सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव, आपका स्वागत है मेरे चैनल गीतांजलि में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उसका डिफिनेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे और मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को जानेंगे। मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होती है, उसको जो डायमेंशन है उसका कंस्ट्रक्शन से क्या रिलेशन है, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के तहत बेसिकली हम नंबर ऑफ एलिमेंट को समझेंगे कि एक मैट्रिक्स क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स बेसिकली एंड व्हाट इज द रिलेशन with its order. Okay, so first thing is that define the matrix. So the matrix is basically an array. So matrix basically क्या है? So matrix is basically an array. Okay, and rectangular array. Its matrix is basically a rectangular array. Okay, अब ये रेक्टेंगुलर एरे तो है, बट ये एरे टू डायमेंशन बेस्ड एरे है। सो हम इसको बोल सकते हैं कि एरे ऑफ m and n, ओके, m and n और रियल और कॉम्प्लेक्स, m and n रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो मैट्रिक्स इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m and n where this m represent the row and this n represent the column. okay, so चलते हैं, देखते हैं, इसको डिफाइन करके देखते हैं। so we can say a rectangular array of m and n, real or complex, arranged in m horizontal rows and n vertical columns. ओके, सो बेसिकली एक एरे है, मैट्रिक्स एक एरे है जहां पे m बेसिकली जो है रोज को और n कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नंबर 2, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, बाय capital letter cap, it represented by capital, generally capital A, B, C, capital A comma B comma C, used to represent, used to dot dot dot, used to represent, ठीक है, used to denote, okay, denote matrix. Done. So let the matrix A, and one thing more, that a symbol used
a symbol the big bracket or parenthesis used to define the matrix. Okay, so let A is a matrix. So the matrix whose element are Aij, whose elements are having the m row and n column. That means that A1, A11, A12 dot 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 A1n. So this is simply one dimension array known as row array. Same as A M1, A M2 and so on A M n. Okay, so order is m n. Okay, so this is basically the general representation of a matrix. That's why I said here that a container matrix is basically a container, rectangular container having m rows and nth column. Okay, so here I means row represent the rows and j represent the column. Same as m represent rows and n represent column. Okay, now one thing more, that in this above matrix A, this particular thing is represent the rows. So this is basically the row. These values are basically representing the row. Okay, so this data is basically a row and this particular data represent column. Okay, so in other words we can say matrix is basically a collection of two-dimensional collection of any data in the format of rows and column. Okay, so matrix is basically an rectangular array having m rows and n columns. Okay, now another thing is key, what is basically dimension or order of a matrix. Okay, so this particular value, that is a m into n. So order, so m into n, these particular things represent the order of a matrix. So these particular things represent that, so product of these particular things is represent the dimension of matrix A, of matrix A.
This thing is also called order of matrix. Order of matrix A. Matrix A. Okay, and the order of matrix A, these terms define the maximum number of elements inside the matrix, inside the given matrix. Okay, so as you know that capital letters always represent the matrix, and here this Aij represents this particular things, represent element, and these particular things represent the matrix. So we can say that matrix is nothing, it's basically a set of elements. So we can also say the matrix is basically a set of elements. Understood? सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स एक समूह होता है एलिमेंट्स का जो रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ओके, और रो एंड कॉलम का जो प्रोडक्ट है उसे हम ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं इस चीज को डिफाइन करता है। ओके, और इस ऑर्डर को हम पढ़ते हैं m/n। ओके, एंड इट रीड एज दिस थिंग, रीड एज m/n। ओके, सो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सो एक कोई मैट्रिक्स है, लेट एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। ओके, सो लेट मेरे पास में लेट मैट्रिक्स ए है और ये 2x2 की मैट्रिक्स है। सो लेट इसके एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3, 4। ओके, सो दिस इज द मैट्रिक्स of order 2x2. Okay, so why 2x2? Because it has two rows. So this is the row 1, this is the row 2. So number of rows are basically the 2. Okay, and this is the column 1 and this is the column 2. So the number of column is also 2. Okay, same as let we have another matrix. So this thing is particular basically the, so this thing is basically the order. Okay, so this thing is basically the order. Okay, next let the matrix B having the element 1, 0, 1, 2, 1, 3. Okay, so as you know, you have the R1, you have the R2. Okay, so number of row is basically 2, and you have C1, you have C2, you have C3. So number of column are basically the 3. Okay,
So this particular always represent for row and this always represent for the column. Okay, and m into n has basically the also represent the number of element. So नोट डाल के आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं. नोट दैट m the order the m by n always has mn elements. Okay, within the matrix, within the matrix. ओके, सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स एक प्रकार का कंटेनर है जहाँ पे डेटा को रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं. रो को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है रो की फॉर्मेट में, और n जो है बेसिकली कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को जब अरेंज किया जाता है तो उसे हमने n से रिप्रेजेंट किया हुआ है. एंड जब ये 2 डायमेंशन रो और कॉलम दोनों कंबाइंड होते हैं तो वो एक मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं बेसिकली. यहाँ पे जो बेसिकली नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है, सो द प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम वो एक ऑर्डर को डिफाइन करता है या किसी भी मैट्रिक्स के डायमेंशन को डिफाइन करता है, जैसा कि ऊपर दोनों एग्जाम्पल में दिखाया गया है. एग्जाम्पल जो मैट्रिक्स ए है उसमें 2 रो और 2 कॉलम है. मैट्रिक्स बी में बेसिकली 2 रो और 3 कॉलम है. सो ये रो और कॉलम का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट विद इन द मैट्रिक्स को शो करता है, जैसा कि 2 into 2 दैट इज अ 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए आर बेसिकली 1 2 3 4. देयर आर 4 एलिमेंट्स. व्हाइल इन मैट्रिक्स बी आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका ऑर्डर 2 into 3 है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे 6 एलिमेंट होने चाहिए. तो 6 एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हैं जो कि 1 0 1 2 1 3 हैं. सो उम्मीद करता हूं कि आपको मैट्रिक्स एग्जाम्पल के साथ समझने में आपको आसानी हुई होगी और बाय डेफिनेशन भी आपने समझा कि मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि उसके एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. वहाँ पर बेसिकली डिनोमिनेशन के लिए मैंने 2 सिंबल्स का उपयोग किया है. सो बेसिकली बिग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किसी भी वैल्यू की मैट्रिक्स या को रिप्रेजेंट करता है या एरे को रिप्रेजेंट करता है, या पैरेंथेसिस के अंदर इन वैल्यूज को लिखेंगे तो वो भी मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है. सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए और उम्मीद करता हूँ आपको मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गई होगी. फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रह गई है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. और फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं. बहुत बहुत धन्यवाद. सभी दोस्तों को नमस्कार. मैं जगदीश यादव. आज हम मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं और चलिए देखते हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स के तहत स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है. ओके, सो दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स जो है बेसिकली एक कॉलम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है बट इट हैज़ सम कंडीशन. ओके,
सो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बट it has number of row and column must be equal. So we can say that a square matrix is basically one in which, so we can say basically that a rectangular matrix, a rectangular a rectangular okay matrix which has number of rows equal to number of column, okay, number of column, okay. सो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. इट मीन्स that is basically that m must be equal to n, okay, or simply I must be equal to j, okay. So this is the condition for any given matrix, so that matrix will called the square matrix. एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं. सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. सपोज मेरे पास में एक मैट्रिक्स है और जिसके एलिमेंट हैं 1 0 एंड 0 1. अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो इसका ऑर्डर 2 है एंड 2 बाई 2 है, जहाँ पे ये बेसिकली नंबर R1 है और ये आपकी R2 के एलिमेंट हैं. इसी तरीके से ये C1 के एलिमेंट्स हैं और ये C2 के एलिमेंट हैं. सो दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो, okay. So here there are 2 rows, okay, number of rows, and this thing represent the number of column, okay, जो कि इस केस में नंबर ऑफ कॉलम जो हैं बेसिक अगेन C1 और C2 है. So this thing is represent the number of rows, number of column. So the above condition that m and n must be same, ये satisfy होती है. So यहाँ पर जो A है basically वो एक square matrix है. So we can say here, so A is basically the square matrix. So square matrix, okay. So it is basically square matrix of order 2. Understood? अगेन हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और समझते हैं. सपोज हमारे पास में एक दूसरी मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल 2. सपोज लेट दैट वी हैव द मैट्रिक्स B और उसके एलिमेंट हैं कुछ इस प्रकार से हैं. सो 3 -1 6 and this is 8 2 9 0 7 3. So here if you observe again, it has the number of row R1, R2 and R3 and C1, C2 and C3. So here number of row are 3 and number of column again they are 3. So since the number of rows and column, so this is the value of m and this is the value of n, okay. So
this is the value of n. So n for the column, this is column and this is basically the row. Okay, so in matrix B the number of rows equal to number of columns. So again the matrix B is a square matrix. Okay, so again here, so B is square matrix of order 3 ओके। सेम एज अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, चलिए सपोज एग्जांपल नंबर 3, लेट वी कंसीडर, सपोज मेरे पास में एक मैट्रिक्स C है जिसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हैं, 5 -1 8 3 2 5 7 8 3 6 11 0 0 -1 8 7. Okay, so this is basically a matrix containing these number of elements. So if you observe that here that this is basically the element of R1. so ये basically आपकी R1 है, ये एलिमेंट आपकी R2 है एंड ये बेसिकली आपके पास में R3 के एलिमेंट है और ये R4 है। ओके, so the number of rows are basically the 4. okay, if you observe, this is a column 1, this is the column 2 and this is the column 3 and this is the column 4. okay, so again this is 4. so this is the value of m and this is the value of n. so m represent the number of rows, okay, and n represent that number of column. Okay, so again the number of rows and column are equal, so both are equal. okay, so if they are equal, so again C is basically a square matrix. okay, so it's a square matrix of order 4. okay, because number of rows 4 and number of column 4. ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी आपको समझ में आई होगी। सो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अगर वीडियो एक बार देखने में आपको नहीं समझ में आई है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखें और आपको ज़रूर समझ में आएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होते हैं और ऑर्डर क्या होता है। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव, आप देख रहे हैं गीतांजलि चैनल, मेरा चैनल गीतांजलि। और आज हम टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस के तहत बेसिकली एक नई प्रकार की मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स इज बेसिकली अ मैट्रिक्स where the rest element are 0 except diagonal. Okay, so we can define that a matrix, that a square matrix let A having element Aij of order m into n, for which Aij equal to 0 for I is not equal to j only. Okay, so this thing is called, basically this particular condition is basically called a diagonal matrix. ओके, सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हों कि जहाँ भी रो और कॉलम की वैल्यू एक दूसरे के बराबर ना हो, वहाँ के एलिमेंट हमेशा 0 हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है अभी आपको शायद उतने अच्छे से समझ में नहीं आया है। सो सपोज मैंने यहाँ पे कहा है, एग्जाम्पल में लेके आपको समझाता हूँ कि सपोज मेरे पास मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए है, जो कि जिसके एलिमेंट ए आई जे हैं और जिसका ऑर्डर m इंटू n है, या मैं बोलूँ जहाँ पे m और n बराबर हैं। ओके, सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स या एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m इंटू n है, वेयर m एंड n आर इक्वल, और उसका एलिमेंट ए आई जे है। सो ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट आपका नॉन जीरो है एंड रेस्ट एलिमेंट आपके क्या है? 0 है। ओके, so it can be written as with the condition that Aij equal to 0 for I is not equal to j. Okay, so that means that 1, 0, 0 and 2. So this is basically a diagonal matrix of order 2 by 2, same as, so here, so this is the example of a diagonal matrix. So here आप यहाँ पे देखिए कि since this is the element of first row and first column, so here I and j are equal, so this is non-zero value here, that is this is the position of first row and second column. It means I and j are not equal, so the value is 0. Again, this is the position of second row and first column, so value is 0, and this is again the number of the row second and column second, so value is non-zero. So a matrix where the diagonal elements are non-zero. So in short we can say,
a matrix where diagonal element or non-zero and rest are zero. Okay, called diagonal matrix. Okay, सो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। सो सपोज आपके पास में जो एलिमेंट है सो लेट आपके पास में एलिमेंट हैं, let the matrix D whose element are basically 4 0 0 0 minus 2 0 0 0 and 6. Okay, so if you look this particular case, so here again the non-zero element okay, and rest zero element, rest zeros. Okay, so again this is a basically again the matrix D is a basically a diagonal, so diagonal matrix of order 3. okay, moreover चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं और वहां पे देखते हैं कि क्या होता है। ओके, so let we have example number 3. okay, so let we have matrix E whose elements are 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5. okay, so again if you look that this diagonal elements so these are the diagonal elements. okay, and rest element and rest. So again the matrix E is diagonal matrix of order 4. okay, 4x4 मैट्रिक्स। सो उम्मीद करता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं और डायगोनल कैसे चेक करते हैं। हम लेफ्ट डायगोनल कंसीडर करते हैं या मेन डायगोनल करते हैं या माइनर डायगोनल कंसीडर करते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ मेन डायगोनल एलिमेंट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार और देखें और फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रह जाता है तो आप कमेंट करें
और आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दिया जाएगा। एंड ज़रूरत पड़ी तो उस पर हम कस्टमाइज आपके लिए एक नया वीडियो बना सकते हैं। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश यादव आपका स्वागत करते हैं गीतांजलि चैनल में। आज हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक के तहत स्केलर टाइप की मैट्रिक्स का डिस्कशन करेंगे। सो चलिए देखते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, सो बेसिकली a scalar matrix is basically a diagonal matrix. Okay, so it is basically a diagonal matrix. Okay, so let diagonal matrix A equal to matrix having element Aij of order n into n, because it is a square matrix since, so the number of rows and column are same, so they are represented by n into n. Okay, for which all the term on the main diagonal are equal. Okay, are equal. Okay, so such kind of matrix is known as a scalar matrix. So that means that Aij must be equal to k for I equal to j, and Aij equal to 0 for I is not equal to k j. Okay, so let k means some constant value, so let we think that is let -5, 0, 0, 0, -5, 0, 0, 0 and -5. So if you look the diagonal, so here, so this is your main diagonal, so this is main diagonal. Okay, so this is main diagonal, and the element of main diagonal are equal to some constant value. Okay, so here A11, A22, A33 means I equal to j. That means number of rows and number of columns are same and equal to -5, and rest are 0 and rest 0. सो हम बोल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है या एक डायगोनल मैट्रिक्स है,
जहां पर जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो हैं बट वो सेम होंगे, ओके, एंड रेस्ट एलिमेंट आर बेसिकली जीरो, ओके। सो एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए। So we can say the identity matrix, let we are taking the I2. So I2 is basically the 1 0 and 0 1. So this is also a scalar matrix, okay. So this is also a scalar matrix. So उम्मीद करता हूँ कि आपको स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप मुझे कमेंट करें, और हाँ, अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है सो प्लीज़ करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं जगदीश यादव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल गीतांजलि में। आज का टॉपिक जो है बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है। सो आज हम देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है और इसकी खासियत क्या होती है, ओके। सो basically the identity matrix is what? The identity matrix is basically a square matrix, okay. So a square matrix, okay. A square matrix of matrix A, that is Aij of order n, is said to be is said to be the unit matrix, the unit matrix or identity matrix if it follow a condition that the element Aij or 0 for 0 for if I is not equal to j, and 1 for if I equal to j, okay. So a square matrix whose elements are 0 for where the position of row and column are not equal, and the value is 1 where the number of rows, number of the position of row and column are same. For example, एग्जाम्पल के लिए तौर पे हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट a इक्वल टू 1 0 0 1. So the position of this one is basically the first row and first column, okay. So number of row and number of column is same, so position is 1, and here rows and column are not same, so value is 0. So such kind of matrix is known as matrix I. So it is represented by capital I. So this is the matrix of 2 by 2 order, so it known as I2, okay. सेम एज अगर मैं कोई और मैट्रिक्स लेता हूँ, सेम, लेट
that 1 0 0 and 0 1 0 0 0 1. So again this is a 3 by 3 order matrix. So again this is identity matrix represented by I3. Okay, suppose एक हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं and suppose we have matrix A whose has only one elements. So again this is a basically again a matrix of single row and single column, and this is known as I1. Okay, so identity matrix of order 1. Okay, so हम बोल सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक प्रकार की स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट केवल 1 ही हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता। ओके, सो अगेन उम्मीद करता हूं कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा समझ में आ गया होगा। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ बेसिकली मैट्रिक्स whose diagonal elements is always 1 and rest elements are 0, and there the number of rows and column are same. So such kind of a matrix arranging a data of 0 and 1 is known as basically the identity matrix. So बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरी हैं या आपकी कोई पर्सनलाइज प्रॉब्लम है तो आप मुझे सेंड करें, निश्चित ही उसका समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं जगदीश यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गीतांजलि में, जहाँ पे आप आज डिस्कस मैं करूँगा आपके साथ एक नए टॉपिक को जिसका नाम है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर्स। सो आज हम सीखेंगे कि रो मैट्रिक्स कब होगी कोई मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स कब होगी, और वो रो वेक्टर कब कहलाएंगे और कॉलम वेक्टर कब कहलाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं। सो अ मैट्रिक्स जिसे हम रो वेक्टर या रो कॉलम कहते हैं कब कहेंगे। सो अ मैट्रिक्स with just one row of element, okay, is called row matrix or row vector। अंडरस्टूड। एक मैट्रिक्स जिसमें केवल सभी एलिमेंट रो की फॉर्म में हैं और वो सिंगल रो है, तो उस चीज को हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हैं 2 5 -15। सो यहाँ पे देखिए आपके पास में केवल एक ही रो है, सो 1 रो while 3 कॉलम। ओके, सो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, सो दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स। ओके, मोर ओवर हम देखते हैं कि जो
आपके पास में कॉलम मैट्रिक्स है वो क्या होगी? सो बेसिकली column matrix is basically a matrix with just one column of element, okay, is called column matrix. Done? Or column vector. सो एक मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट केवल एक ही सिंगल कॉलम के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, let matrix B and is equal to 3, 5 and 7. So here the number of rows are 3 while the column is 1. Okay, so उम्मीद करता हूँ कि रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स में क्या अंतर है आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। इसी आशा के साथ में हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं जगदीश यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल गीतांजलि में। आज हम मैट्रिक्स के तहत बेसिकली एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। सो चलिए देखते हैं कि नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, सो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, एक ऐसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। सो अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements or zeros, all elements are zero. Okay, so is called null matrix, null or zero matrix, okay, and it is represented by capital O. Okay, it's represented by capital O of order m into n. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। Let we have a matrix of 2 by 3 and that is basically 0 0 0 0 0 0. So again this is also a zero matrix, or simply 3 by 2
So 0 0 0 0 0 0. So here 3 rows and 2 column, and here 2 rows and 3 column. Okay, so the thing is कि ये आपका जो बेसिकली है ये नल मैट्रिक्स हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज वी हैव 0 2 by 2 ऑर्डर, so it means 0 0 0. So this is 2 by 2 order matrix, or simply 3. So it will be 0 0 0 0 0 0 0 0 0. So this is the order of 3 by 3. Okay, so नल मैट्रिक्स क्या होती है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगी। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 हैं, मैटर नहीं करता है कि वो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। सो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सभी नई वीडियो आपको जल्द निश्चित समय पे आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल गीतांजलि में। मैं जगदीश यादव, आपका दोस्त और होस्ट। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि एक मैट्रिक्स अगर है तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं और उसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज बेसिकली अ मैट्रिक्स which is obtained, so a matrix which is obtained from given matrix, from given matrix okay, from given matrix A by interchanging of interchanging of its row and column। ओके, सो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम को अगर हम चेंज कर दें और इसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलती है उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, एंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय A dash। okay, so A dash or sometimes A T will represent a transpose of matrix। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज अगर आपकी सपोज द मैट्रिक्स A whose elements are -3 2 5 0 7 8, then
then its transpose then transpose matrix of A will be that A dash is equal to -3, 2, 5, 0, 7 and 8। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और इसे नोट डाउन करें, और फिर भी कोई कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। फिर भी अगर आपने मेरी वीडियो में अच्छा लगा हो कंटेंट, किसी प्रकार की आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया हो, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं जगदीश यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल गीतांजलि में। आज का टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो हम सीखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सो व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स and what is a skew symmetric matrix? So a square matrix A element Aij of order n into n is said to be symmetric matrix if transpose of A or A dash is equal to matrix A. Okay, and it called skew symmetry if A transpose is equal to minus of A. Okay, so this is the condition for skew symmetry and this is the condition for symmetry matrix. चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सो एग्जाम्पल, सो लेट आई हैव अ मैट्रिक्स ए। ओके, एक मेरे पास मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट हैं 1, -1 एंड -1 एंड 2। ओके, एंड इसका जो ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, रोज को कॉलम में चेंज कीजिए। सो 1, -1 and -1, 2. So if you observe both conditions, so that A
transpose is equal to again original matrix, so there is no changement of the transpose of matrix and the given matrix. So this above matrix is an example of symmetry matrix. So here it is an example of symmetry matrix. Okay. While if I have another matrix, let B, let it L is, it has 0, -3, 3 and 0 elements. If you take the transpose, so that will be again 0, -3 and 3, 0. So if you take the minus sign common, so it will have 0, -3 and 3, 0, which is equal to again the matrix B, so minus of B. So this is the condition for the skew symmetry. So it's known as skew symmetry matrix. So उम्मीद करता हूँ कि सिमेट्री मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है और किस प्रकार से रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और उसे नोट डाउन करें, आपके डाउट्स या क्वेरी सभी क्लियर हो जाएंगे। और अगर दोस्तों मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए फ्री में कंटेंट बनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।